We have a question which says a gas behaves more closely as an ideal gas at which of the following conditions? The answer to this would be at low pressure and high temperature. Now let's see why. So we know that in ideal gases, size of molecule is neglected, right? So for low pressure, for low pressure, there is low concentration of molecules. As there is low concentration of molecules, therefore they do not form clusters, and therefore their sizes can be neglected. Now coming on to the temperature part, the ideal gas should have high temperature. The ideal gas behaves more ideally at high temperature because at high temperature, collision is more, kinetic energy is more. Therefore, there is minimum interaction among each other. Attraction among molecules. So these are the two reasons. Thank you. The given question is a gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature capital T. Neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system is option says 4 RT, 15 RT, 9 RT, and 11 RT. Okay, so we know that for n number of moles of a gas, the internal energy U is given as 1 by 2 N F into R into T, where N is the number of moles, F is the degrees of freedom, R is the universal gas constant, and T is the temperature. And here U is the internal energy. Okay, so we have for O2 and let's say for argon, we have 2 moles of oxygen gas and 4 moles of argon. So we know the number of moles. For degree of freedom, we have a relation. So degree of freedom can be find by this relation 2n plus 1, where as n is the number of atoms. So for degree of freedom for O2 will be 2 into C. Oxygen is a diatomic gas, so this the value of n will be 2 plus 1, and this will give 5. And for argon, we have F of argon equals to 2 into argon is a monatomic gas, so this will be 2 into 1 plus 1, and this will be 3. So let's find out. The internal energy for O2 will be half into number of moles is 2, degrees of freedom is 5 into R into T. We have to find the answer in terms of RT as seen from the options. So this will give 5 RT. Further, the internal energy of argon gas can be found out as half into 4 into, and this is 3 R into T. On solving this, we can find the value of internal energy of argon gas as 6 RT. Thus, we can say that the internal energy of the system would be equals to internal energy of the oxygen gas plus internal energy of the argon gas. So that is 5 kT plus 6 kT, and together it will form 11 kT. Hence, the option D would be the correct option. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको गिवन है 2 आइडेंटिकल कंटेनर्स ए एंड बी, ठीक है, जिनपे हमको प्रोवाइड है कि उनमें फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स लगे हुए हैं कंटेन द सेम आइडियल गैस एट सेम टेम्परेचर एंड सेम वॉल्यूम, ठीक है,
तो यहाँ पे टेम्परेचर सेम है हमारे पास, वॉल्यूम सेम है हमारे पास, राइट। और हमको मास ऑफ गैस इन ए दिया हुआ है, एम ए है, और मास इन गैस बी है, एम बी, ठीक है। अब हमको बताया गया कि द गैस इन ईच सिलेंडर इज नाउ अलाउड टू एक्सपैंड आइसोथर्मली, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर देते हैं आइसोथर्मली, मतलब कि कुछ भी जो टेम्परेचर चेंज है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे डेल्टा जीरो है हमारे पास, टू द सेम फाइनल वॉल्यूम 2V, तो V से वॉल्यूम होगी यहाँ पे 2V, ठीक है। सो अब चेंजेस इन द प्रेशर इन A एंड B आर फाउंड टू बी डेल्टा P, और यहाँ पे है 1.5 टाइम्स डेल्टा P, ठीक है। तो हमको अब गिवन ऑप्शन में बताना है कि जो रिलेशन है हमारे मास ऑफ ए और मास ऑफ बी के बीच में वो क्या होंगे, ठीक है। तो देखो, अगर तो मैं क्या करूँ कि ए और बी कंटेनर्स के लिए अपने डिफरेंट डिफरेंट पहले तो वो लिख लेता हूँ आइडियल गैस इक्वेशंस। तो ए के लिए होगा पी ए इंटू वी इज इक्वल टू मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए इंटू आर टी, ठीक है। और बी के लिए होगा पी बी इंटू वी इज इक्वल टू मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी इंटू आर टी, राइट। और जो फाइनल हमारे पास इक्वेशन है कि वो होगा पी ए इंटू टू वी इज इक्वल टू एम ए अपॉन एम इंटू आर टी, और यहाँ पे सेकेंड कंटेनर बी में होगा पी बी डैश, ये होगा पी ए डैश पी बी डैश इंटू टू वी इक्वल टू एम बी अपॉन एम इंटू आर टी, राइट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमको डेल्टा पी की वैल्यूज पता है ए और बी के बीच में, ओके। तो डेल्टा पी हमारा जो कि ए में है वो है पी ए डैश माइनस पी ए, उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास एम ए इंटू आर इंटू टी अपॉन एम वी माइनस एम ए इंटू आर इंटू टी अपॉन कैपिटल एम टू वी। इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास एम ए इंटू आर इंटू टी अपॉन टू कैपिटल एम वी, ठीक है। तो ये होगा डेल्टा पी की वैल्यू, ओके। अब दूसरा है हमारे पास पी बी माइनस पी बी डैश माइनस पी बी डैश माइनस पी बी, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास 1.5 टाइम्स डेल्टा पी, जो कि हमारे पास आएगा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद मास ऑफ बी इंटू आर इंटू टी अपॉन टू कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी, ठीक है। तो यहाँ से आ गया मेरे पास इक्वेशन 1 एंड 2 डेल्टा बी के बीच में, राइट। तो अगर मैं 2 डिवाइड बाय 1 कर दूँ यहाँ पे, 2 डिवाइड बाय 1 कर दें यहाँ पे हम, तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, देखते हैं एक बार। डेल्टा पी इंटू 1.5 अपॉन डेल्टा पी विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे है मास ऑफ बी इंटू आर टी अपॉन 2 एम वी इंटू एम ए आर टी अपॉन 2 एम वी, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी मेरे पास, ये सब कट कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास, राइट। और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा हमारे पास फाइनली मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए का रेशियो है वो होगा 1.5 के बराबर, जो कि बराबर होता है 3/2 के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2 एम बी विल बी इक्वल टू 3 एम ए, ठीक है। तो ऊपर गिवन ऑप्शन में से जो मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा 2 एम बी इक्वल टू 3 एम ए, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन मेरे इस क्वेश्चन में जो रेशियो ऑफ मासेज हैं उनका करेक्ट रिलेशन है, राइट। Hi everyone, in this question it is given that a vessel contains a mixture of 1 mole of oxygen and 2 mole of nitrogen at 300 Kelvin, and you have to find the ratio of average kinetic energy per O2 molecule to that of average kinetic energy per N2 molecule. Okay, so there is a vessel in which 2 moles of nitrogen and 1 moles of oxygen are together at 300 Kelvin, and you have to find the ratio of kinetic energy of 1 molecules of oxygen and N2 gas. So we have a simple formula that average kinetic energy
average kinetic energy of one molecule of any gas is given by 3/2 into Boltzmann constant Kv into absolute temperature T. Okay, so energy of one molecule of O2 can be given by 3/2 Boltzmann constant into temperature 300. Similarly, the energy of one molecule of N2 can be given by the formula in the same way, like 3/2 Boltzmann constant into temperature is here also 300. So now you have to find the ratio, that is you have to find the value of energy of one molecule of O2 upon energy of one molecule of N2. Put these values that you have calculated earlier here, 3/2 kV into 300 upon 3/2 kV into 300. So you can see that each term in numerator and denominator are same, so everything will be cancelled out and you will find the ratio as 1/1. This implies EO2 is to EN2 is 1:1. So look at the options you have given in the question. The correct option is first one. Okay, thank you.